This conference will now be recorded. I think we have already discussed about what are the prerequisites to set up our hybrid environment. So over a portal, what we need to do over a portal, you just need to create one user. User should be a member of global administrator. It's a type of role that you need to assign to your Azure user. And in on-premises, install ADDS services that we have already installed. It may Mhm. be 2019, 2016, or 2022. It is applicable for all types of domain controller. Download Okay. Azure AD Connect tools, and you must need to connect at least 10 to 15 Mbps of internet speed. And final, you need to download our Azure AD Connect tools and install it. These all are the prerequisites that we need to set up. So what I'm going to do, I'm going to move ourselves to the portal. This is Mhm. our ऑन प्रोमाइसिस एडी जो हमने इंस्टॉल कर रखा है अपने VMware वर्कस्टेशन में एंड द Okay. डोमेन नेम इज training.com. हमारा जो ऑन प्रोमाइसिस डोमेन है ना which is Mhm. training.com. Okay. So both the site domain should be similar or no? So the different domain is also able to sync. We'll discuss about it, the same as well. एक्चुअली अगर आपने सेम नेम से डोमेन नहीं परचेज कर रखा है, ठीक है, Give me a minute. अगर आपने ऑन प्रोमाइसिस पे training.com लगा रखा है, ठीक है, एंड Mhm. एज्योर एडी पे अपने पास कोई भी डोमेन नहीं है, तो जो आप यूजर सिंक्राइज करेंगे ना वो सभी ऑन माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे Okay. because you are not matching your UPN. If you want to get a same name that you establish on premises, you should purchase at least one public domain from godaddy.com and associate your Azure portal. Then you are able to get the same name. Okay. So no, no. So my question is like we have a like training.com, right? So which is already configured in my hybrid site, means the local on premises. On So premises, should yeah. I, yeah. So should I configure same domain in the Azure portal as well? Yep. Registered. Okay. Then only it is syncing. Otherwise, on premise means cloud side, the domain similar domain is not they are not able to match. So it is going to deploy in the Microsoft default domain. Correct? On Is it? Microsoft.com. Correct. Okay. In both cases, we are able to synchronize the user, right? In both cases, if we don't have any custom domain that we purchase over a Azure portal, then your user will be part of on Microsoft.com. Hmm. अगर अपने पास डोमेन है, सेम डोमेन नेम जो ऑन प्रोमाइसेस पे है, सेम डोमेन नेम आपने एजर पे एस्टैब्लिश कर रखा है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपके यूजर्स जो है डायरेक्टली उसी में सिंक्रोनाइज हो जाएंगे. Okay. Training.com is ready to use. Let me create few users. अभी हमने इसमें कोई भी users नहीं create किए थे, so I'm just going to create few users like as a I'm just going to create AWS. This is our on-premises user, Mhm. and one more user with name of Telnet. One, two, and one more user just need with name of Azure. यहाँ Okay. पे हमने तीन अलग अलग यूजर नेम से यूजर प्रोसीड किया है and our responsibility to synchronize these users to our Azure AD. Okay. And one more question. Whatever user is created over here, like Telnet or this one. So user, whatever policy you choose, like password is never expire, password account is disabled, something like that. So whenever Mhm. you are going to sync with Azure portal, so whatever policy you set over here is automatically syncing with the same policy or no? The policy should be changed or what happened? No, for the users, the entire policy is related to the password. It is similar like you configured on on-premises. Okay. So it's automatically sync whatever uh, Settings before that you syncing, whatever. Yeah, yeah. Okay.
only for the user, and it is Only the one-way synchronization. Just wanted to add, it is one-way synchronization, right? oh, okay. मीन्स अगर हम एज्यूर पे कोई चेंजेस करते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऑन प्रोमाइसेस पे नहीं आएगा। एज्यूर पे कोई यूजर ऐड करेंगे तो वो हाँ यूजर्स हाँ, हमारे ऑन प्रोमाइसेस पे नहीं देखेंगे, बिकॉज इट इज ए वन वे वन बेसिक। सिंक्रोनाइजेशन। ओके, तो एडी कनेक्ट मतलब कि ऑन प्रेमाइसेस से जो भी चेंजेस होंगे वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएंगे वहां पर, लेकिन एज्योर पे जो भी सिंक होगा मतलब क्रिएट होगा वो यहाँ सिंक नहीं होगा कभी। नहीं नहीं नहीं, दैट्स व्हाई इट इज वन वे। Okay, fine. So right now we are on page of our Azure portal, Azure AD. So what are the prerequisites? We have already discussed about the prerequisites. यहाँ पे हमारे पास कुछ users already available हैं, like text and GCP. So what I'm going to do, I'm just going to remove all the user because wanted to proceed from the very basic. सबसे पहले हमें क्या करना है, एज्यूर पोर्टल पे हमें एक यूजर क्रिएट करना है। यूजर मस्ट बी अ पार्ट ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। सो एज वी नो दैट जब हम ऑन प्रोमाइसेस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर एडी इंस्टॉल करते हैं ना, तो यू विल गेट एन नंबर ऑफ बिल्ट इन यूजर, and ओके built-in user, like I'm talking about RDP, member of RDP, and enterprise administrator, global administrator, and domain administrator. Multiple options are available on on-premises groups. As it is Azure portal पे जब आप user create करते हैं, it will give you option to create a, what we can say that it will give you option to create a member of our existing users, existing group. यहाँ पे भी मल्टीपल ग्रुप्स अवेलेबल हैं जिनको आप मेंबर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके GCP group creation, I'm just going to proceed with the same name, GCP, and create. Users should be a part of global administrator, so you should open the properties of users, and this is the member of global administrator. You should be assigned the role of global administrator. It's a first login. You must need to reset the password. So I'm going to log in on incognito wizard to reset the password of our new user. ओके। The username is gcp at glookcreation.com. Now we successfully reset the password. What you need to do, back to the on premises and follow the step. The steps are, सबसे पहले तो आपको verify कर लेना है कि in your on premises machine should be in, internet accessible at least 10 Mbps of speed, ओके and download one tool, Azure AD Connect. डायरेक्टली हम यहाँ पे टाइप कर देंगे डाउनलोड
It's just a 150 MB of tool. Okay. And proceed to install because we have already created a global administrator account. So Mm-hmm. while installation हमें इन दोनों की information provide करनी पड़ेगी, तो easily we can just need to provide the information about our global administrator account and on-premises AD. Use express setting because this is the first time of installation, so you just need to proceed with the express setting. This is the panel where we can provide the username of global administrator account, gcp@glucreation.com, Okay. and provide the password जो भी global administrator का हमने mention किया था, and click next. The password will help us to make a connection between on-premises to Azure portal. Okay. एंड सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, आपने जो डोमेन तैयार किया ना, विच इज training.com एंड स्लैश एंड लोकल यूजर नेम, तो हमने एडमिनिस्ट्रेटर मेंशन किया है एंड प्रोवाइड पासवर्ड administrator Okay. and next. Password incorrect, okay, sorry. We are able to find one option continue without matching all UPN suffix to verified domain. Okay. What do you think about the UPN? Uh, I don't know. UPN, Universal Port Network or something. I don't know. Okay, universal sorry, username uh, principal, basically UPN, user principal name, which is User related principal. to the, Okay. yeah, user Huh. principal name which is related to our domain controller जो आपने on premises पे ऐड किया है. अगर Mm-hmm. ये नेम Azure के डोमेन से मैच हो जाता, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं आता फिर. Got it. अगर सेम नेम training.com अगर आपके क्लाउड पे अगर आपने परचेज किया होता godaddy.com से और एसोसिएट किया होता अपने Azure AD से, तो ये जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ना, ये ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ता. Got it. But unfortunately we don't have a name ना, Mm-hmm. so that's why it's asking for UPN suffix कि Okay. ये आपका जो UPN suffix है वो मैच नहीं कर रहा है, so you should check mark it, next and install. अभी हम बेसिक तरीके से इंस्टॉल कर रहे हैं, but after that we'll discuss about the options which is available. Multiple option we will find in case of our what we can say that in case of our Azure administrator, Azure connectivity, Azure AD Connect. तो अभी जैसे ये रेडी हो जाता है we will proceed for the next. Okay.
Okay, so our AD Connect installed successfully on premises. Mhm. Back to the Azure portal. Open our root account. This is our root panel. Users. Refresh the page. It may be take time. We are able to find our on-premises computer name. जो भी हमने on-premises computer name mention किया था वो available है. So it may be Mhm. take time. 3 user हमने बनाए थे on-premises पे AWS, Azure and Telnet. So it will reflect on this particular panel. Now the users that we created on premises successfully migrated, not migrated, successfully synchronized with our Azure Active Directory panel, right? So Hmm. AWS, Azure and Telnet ये तीनों user हमने on premises पे बनाए थे, which is successfully synchronized. How we can identify? आप देखिए यहाँ पे एक option दिखाई पड़ रहा है, which is on premises sync enabled, right? AWS, Hmm. Azure and Telnet के सामने देखिए तो आप देखिए yes लिखा है. It means that these users are synchronized from on premises. Is that clear? Correct. Yes. But unfortunately, all the users are associated with on Microsoft.com. Only the reason Hmm. of unmatched UPN suffix, राइट. Hmm. अनमैच यूपीएन सफिक्स क्योंकि हमारा UPN जो ऑन suffix. प्रोमाइसेस का डोमेन है वो हमने ट्रेनिंग डॉट कॉम से बना रखा है. tsa.msc. The users that we created on premises वो training.com है, and the Training. domain that we have basically वो on microsoft.com पे है. तो दोनों ही जो यूपीएन है ना, यूजर प्रिंसिपल नेम है, वो मैच नहीं कर रहे हैं. So we are unable to Correct. synchronize the user with our, what we can say, that same name. Clear? Got it. Hmm. Now, n number of tasks that we need to perform after installation of, क्योंकि installation तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है. You should know about the core configuration of our synchronization. So I'm going to start from the very basic. मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के केस में ये इश्यूज आते हैं कि उनका यूपीएन सफिक्स जो है वो मैच नहीं करता, राइट? बिकॉज Mhm. जो कंपनी हमारी 25 साल पहले स्टैब्लिश की गई थी या 20 साल पहले स्टैब्लिश की गई थी, उनको नहीं आइडिया था कि आने वाले टाइम पे हमारे अपने यूजर्स को क्लाउड पे सिंक्रोनाइज करने की रिक्वायरमेंट होगी. इज दैट करेक्ट? Correct. और जो ऑन प्रोमाइसिस पे डोमेन तैयार हुआ है वो ऑन प्रोमाइसिस डोमेन हमारा बेसिकली किसी भी नेम से तैयार हो गया जिसका कोई एडी पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है. मीन्स एजर पोर्टल पे या ग्लोबल कहीं पे अवेलेबिलिटी नहीं है. Okay. Hmm. सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज द कस्टम यूपीएन सफिक्स. Hmm. पहला टॉपिक है अपने पास कस्टम यूपीएन सफिक्स. Hmm. The meaning of custom UPN suffix is basically related to, अगर अपने पास Azure पोर्टल पे, मीन्स ये अपने पास Azure पोर्टल है, ऊपर है Azure पोर्टल, we establish a one domain with name of onmicrosoft.com. This is default one. ये हमारे पास क्या है? Default one है. Default one. Hmm. यहीं पे हमारा दूसरा डोमेन हमने परचेज कर रखा है ग्लो क्रिएशन के नाम से. ये हमारा सेकेंडरी डोमेन है जिसको हमने godaddy.com से परचेज कर रखा है. इज दैट करेक्ट? Yes. We have an on-premises domain controller, which is training.com, जो इन दोनों से हट के है. हमारा जो on-premises का domain है, which is training.com. Hmm. And we created 3 different users, AWS, Azure
एंड टेलनेट। ये तीनों यूजर्स हमने ऑन प्रोमाइसेस पे क्रिएट कर रखे हैं एंड वी सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज दीज यूजर्स टू आवर एज्यूर पोर्टल एज Azure. वेल। इन तीनों यूजर को हमने एज्यूर पोर्टल के ऊपर सिंक्रोनाइज कर रखा है। नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इन यूजर्स को हम अपने डोमेन के साथ ऐड करें विच इज glucreation.com। तो ये पॉसिबिलिटी आप क्लाउड से नहीं चेंज कर सकते। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू मेक अ चेंजेस विद आवर यूजर्स यूपीएन सफिक्स। अगर आप यहाँ पे ट्राई भी करते हैं यूजर्स की प्रॉपर्टीज में जा करके, so we are not authorized to make any changes with users domain। आप एडिट पे Okay. जाइए यूजर्स की प्रॉपर्टीज ओपन करके एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई भी ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है कि आप अपने डोमेन नेम को बदल सकते हैं। राइट, वी डोंट हैव ऑप्शन। Hmm. यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है एंड इट विल गिव यू द ऑन प्रोमाइसेस डोमेन नेम कि आपका ऑन प्रोमाइसेस डोमेन नेम ये है, यूजर प्रिंसिपल नेम ये है, बट यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है कि आप इसको glucreation.com का मेंबर बना पाओ। इज दैट करेक्ट? Correct. So what you need to do, custom domain suffix come into the picture। अभी अपने सभी यूजर जो ऑन प्रोमाइसेस से सिंक्रोनाइज हुए हैं वो ऑन microsoft.com से जुड़े हुए हैं एंड आई एम प्लानिंग टू मेक इट glucreation.com। हम चाहते हैं कि ये सभी यूजर glucreation.com से जुड़ जाएं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी जस्ट नीड टू ओपन आवर यूजर्स डोमेन, कस्टम डोमेन। दिस इज आवर डोमेन नेम, राइट? glucreation.com। Hmm. Correct. यहाँ से इस glucreation.com को कॉपी करो बैक टू द ऑन प्रोमाइसेस एंड ऑन प्रोमाइसेस पे आपको जाना है। जस्ट नीड टू ओपन सर्वर मैनेजर विजार्ड। यहाँ पे हमने सर्वर मैनेजर विजार्ड ओपन किया, टूल्स पे गए हैं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट पे गए, राइट क्लिक ऑन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, गो टू द प्रॉपर्टीज। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है यूपीएन सफिक्स। दिस इज अल्टरनेटिव यूपीएन सफिक्स। जस्ट नीड टू Hmm. पेस्ट हियर, add, apply and okay। Clear? Clear. Close it, back to the Active Directory user and computers. Select your user's account and go to the member, not member, account setting और यहाँ से आप यूपीएन सफिक्स को चेंज कर दो, ग्लू क्रिएशन पे कन्वर्ट कर दो। Okay. The UPN fully qualified domain name, fully qualified name for this particular user is telnet@glucreation.com। glue creation जो हमारा custom user है। We successfully saved it and what you need to do, we just need to resynchronized, इसको resynchronize कर दीजिए users को। Configure, customize synchronization, next, same password। Okay, no need to make any changes, click next, Okay. next। So here we no need to change any domain, right? It is No, 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 already showing we have already training make dot a change, we have already in changes the background. in on premises। Hmm. Okay.
बैक टू द पोर्टल और एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पे। वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। Done. We successfully changed the properties of our user's account. Correct. ठीक है, दिस इज कंसिडर एज ए कस्टम यूपीएन सफिक्स। कस्टम यूपीएन सफिक्स इन द सेंस कि जो डोमेन हमारे पास नहीं है, मींस इफ यू एस्टैब्लिश योर डोमेन कंट्रोलर विद डिफरेंट नेम, और आपने जो क्लाउड पे परचेज कर रखा है, एज्योर पोर्टल पे परचेज कर रखा है, वो नेम अलग है, सो इन दिस केस यू मस्ट नीड टू कस्टमाइज द यूजर, कस्टमाइज द डोमेन नेम। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेन को कस्टमाइज करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? Yes. And one more question. So because first time is going to sync, right? So might be the next time 10 user is going to create. So again we have to sync or is No, no, automatically no, syncing is going on? no, automatic synchronized, because what happened, according to the Microsoft policy, वैसे तो अगर नेटवर्क अच्छा है, इंटरनेट सही चल रहा है, तो विद इन 500 सेकेंड्स, है ना, मतलब लगभग Mhm. अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट के अंदर, 10 सॉरी 300 सेकेंड, 5 मिनट के अंदर ये सारी चीजें सिंक्रोनाइज कर लेता है। ठीक है, ऑटो Okay. सिंक अपने आप एक्टिवेटेड रहता है, जब भी आप नया यूजर चेंजेस करेंगे कुछ भी, तो वो ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज हो जाएगा। ठीक है, नो नीड टू सिंक्रोनाइज Okay. इट। इफ यू वांट टू सिंक्रोनाइज इट इमीडिएटली, तो कुछ कमांड्स हैं इसमें, एडी सिंक करके, और एडी Okay. सिंक के डेल्टा सिंक करके, डेल्टा सिंक के थ्रू आप इमीडिएटली अपने यूजर को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। Okay. And if अदरवाइज I am आपने going जो to, भी चेंजेस, uh-huh. सॉरी, Yeah, yeah. Yeah, yeah, please. बाकी जो हम यूजर्स क्रिएट करेंगे ऑन प्रोमाइसेस पे, वो ऑटोमेटिक सिंक होते रहेंगे। नो नीड टू एग्जीक्यूट इट अगेन एंड अगेन। बार बार हमें सिंक्रोनाइज करने के लिए जरूरत नहीं है कि बार बार हम अपने एप्लीकेशन को ओपन करें और सिंक्रोनाइज करें। क्लियर? Okay. Clear. इट Second विल thing, ऑटोमेटिक। जैसे आपने बोला था ये हाँ वन वे सिंक है फ्रॉम ऑन premises टू क्लाउड साइड। सो अगर इन केस आई वांट टू चेंज एनी पासवर्ड, हम्म। ठीक है, रीसेट एनी पासवर्ड, सो मैं वापस से मेरे को ऑन प्रेमाइसिस में जाके ही चेंज करना होगा पासवर्ड, यहाँ से नहीं कर सकता? नहीं नहीं, उसके लिए है, कुछ ऑप्शन है अपने पास। एक्चुअली पासवर्ड के लिए ना, हम्म, जस्ट गोइंग टू गाइड यू अबाउट द अनदर फीचर्स। एक्चुअली anyone can synchronize our user within 5 minutes, but कॉन्सेप्ट जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो कॉन्सेप्ट आर, कुछ ऐसी सर्विसेज है यहाँ पे, यू कैन से दैट कोर कंपोनेंट्स ऑफ Azure AD कनेक्ट। ठीक है, ओके। कोर कंपोनेंट्स ऑफ Azure AD कनेक्ट, जिसमें से पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, पासवर्ड हैश SYS सिंक्रोनाइजेशन, एंड सेकेंड है पासवर्ड राइट बैक, और तीसरे नंबर पे है SSO, चौथे नंबर पे है ADFS, पांचवें नंबर पे है कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन। कस्टम डोमेन सफिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कस्टम डोमेन सिंक्रोनाइजेशन ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स। तो जो भी क्वेरी है आपकी, लाइक एज ए कि अगर हमें पासवर्ड रीसेट करना है तो डू वी नीड टू ओपन अवर ऑन प्रोमाइसेस डोमेन कंट्रोलर, या फिर एजर पोर्टल से भी कुछ पॉसिबल है? क्योंकि ऑन प्रोमाइसेस से, अगर केवल ऑन प्रोमाइसेस से होगा तो इट्स रियली डिफिकल्ट ना, कि आपकी जो डोमेन कंट्रोलर है वो पुणे लोकेशन में आपने इस्टेब्लिश कर रखा है, राइट? एंड यू आर वर्किंग इन करेक्ट। लोकेशन ऑफ दुबई, ठीक है? तो करेक्ट। आप वहां से फिर रिमोट लेकर के पासवर्ड रीसेट करो, या फिर किसी को आप गाइड करो कि वो पासवर्ड रीसेट करें, इट्स रियली डिफिकल्ट, सिक्योरिटी ब्रीचेस इसमें आ सकते हैं। सो इफ यू वांट टू मैनेज द यूजर पासवर्ड थ्रू द ऑफिस Azure Active Directory, तो वो पॉसिबिलिटी है, यू कैन चेंज द पासवर्ड फ्रॉम आवर Azure AD पैनल, जिसमें हमें कुछ सर्विसेज को एक्टिवेट करना पड़ेगा। डिफॉल्ट नॉट पॉसिबल, डिफॉल्ट ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें हम अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकें। हमें कुछ सर्विसेज एक्टिवेट करनी पड़ेंगी पोर्टल की साइड से, देन वी आर एबल टू मेक अ चेंजेस विद आवर यूजर्स पासवर्ड, बट विदाउट या डिफॉल्ट सेटिंग में तो पॉसिबल ही नहीं है। इज दैट क्लियर? यस। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट के बारे में हम प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं, एंड जो कंफ्यूजन है आपका ये पासवर्ड रीसेट का, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक ओके। है, तो एक छोटा सा ब्रेक ले ले, जस्ट 15 मिनट ब्रेक एंड श्योर। कनेक्ट अगेन। या श्योर श्योर। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पॉज द रिकॉर्डिंग।